अगर रेलेवेंट रहना चाहते हैं आप तो आपको अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर के साथ साथ अपने आप को भी अपडेट करना ज़रूरी है. But if I talk about Vikrant, I was quite blown away from day one on set. I think he has really inspired and motivated. फॉर एग्जाम्पल आज अगर लव हॉस्टल जैसी फिल्म 190 देशों में देखी जाएगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी को कहीं ना कहीं तो इन्फ्लुएंस करेगी ही करेगी. दंगल में और ज्योति में भी बहुत फ़र्क है, बबीता और ज्योति में, क्योंकि बबीता वहाँ की रही है और ज्योति ने सीए किया है दिल्ली में और पढ़कर आई है बाहर, दोस्त की फैमिली हरियाणा से है. Today we are not making community specific content. We are making content which is universal in language. It's wonderful to have Vikrant Massey and Sanya Malhotra with us. Two very, very unusual actors. It's very difficult to slot them in any bracket whatsoever. I think that is the beauty of their talent. Pleasure having you guys with us on Bollywood Hungama. Thank you Thank so you much for for having having us, us sir. out of the Zoom room. Out of the Zoom room. To a real one. Finally. Finally. All right. So, Vikrant, so I was just going through your entire journey, like say what you've been doing, maybe in the recent past only. So you're hosting a show, like a proper show as well. Yes. So he's moderating that, and yeah. So and you're doing television, you're doing OTT platforms. जी. You're working with the likes of Sanya Malhotra and Deepika Padukone in big films as well. जी. So it's very unusual. One can't bracket you into any sort of what बहुत ही हम लोग पॉपुलरली हम लोग कर सकते हैं कि भाई ये फिल्म एक्टर हैं, जी. ये टेलीविजन एक्टर हैं, ये ओटीटी के स्टार हैं. आप सब जगह के स्टार हैं. सर मैं एक्टर हूँ क्या और मेरा ये मानना है कि ये जो एक ब्रैकेटिंग हो गई है कि टीवी एक्टर फिल्म एक्टर वो नहीं होनी चाहिए. एंड आई थिंक वी आर दी ओनली कंट्री जहाँ पे ये होता है. मेरी बहुत ही कॉन्शियस लड़ाई रही है कि ये जो टैग्स हैं, ये नॉमेनक्लेचर्स जो लगते हैं लोगों पे, वो नहीं होने चाहिए. एंड बट समटाइम्स पीपल टेंड टू डू दैट. आई थिंक वो मेरे से पहले भी था, मेरे साथ भी, मेरे बाद भी रहेगा. बट कोशिश ये है कि वो हटे, एटलीस्ट मेरे लिए हटे. मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे लोग ब्रैकेट करें. पिछले 20 साल से अगर आप देखें तो जितने भी सो कॉल्ड ए लिस्टर्स रहे हैं वो भी टेलीविजन कर ही रहे हैं. यू कैन नेम एवरीवन. तो टेलीविजन पे सभी लोग इसीलिए हैं क्योंकि इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मीडियम. It still remains to be a door-to-door medium. And I'm hosting this show called Kahani Nav Bharat Ki, which speaks about our glorious 75 years of independence, which we attain this year. So sir, कोशिश यही है. I don't want to limit myself, bracket myself. I want to do anything and everything I can. क्योंकि I am someone who's not formally trained. I took the plunge at the age of 17 to learn on the job, and I continue to do so. I think वो चलता रहेगा. आप जॉब पे सीखते रहेंगे और गलतियां करते रहेंगे, उभरते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे. But I think it's also about you're absolutely right about the acting part, the actor part. But आपके जो choices हैं वो भी unconventional है. I think that makes it जो surprise element आपसे related है वो एक दिलचस्प होता है. Like आप जो show host कर रहे हैं, usually actors का ये concept होता है कि that game shows होंगे या फिर entertaining shows होंगे या फिर dance या reality based shows होंगे. At such a young age, you are hosting a show for 75 years of India's independence, and apparently there's a lot of research has gone into it. I think that makes you unusual. That's true. Sanya agrees. Thank you. That's true, definitely. अच्छा मैं कहूँ. आपकी तारीफ हो रही है. थैंक यू सर. सर कोशिश ये रहती है कि आई डोंट नो, आई फील दैट देयर इज अ लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन अराउंड, especially in the last 8-10 years because of the advent of social media. I found this to be the fitting opportunity to come out and talk about stories which we haven't heard of, and which I think are really, really inspiring, intriguing, and also informative at the same time. There is dearth of informative content on television. वही एक रीज़न था. बाकी रहा सवाल स्क्रिप्ट्स चूज़ करने का, तो my first instinct is my gut. I have always believed in the fact that any artist, whether author, painter, actor, writer, it is their responsibility to reflect the times they are living in. And where I come from, sir, I think मैं एक बहुत ही regular middle class family से आता हूँ. And I feel that I want to bridge the gap जो एक disparity है. There is a certain section of society जिनकी कहानियाँ
नहीं बताई जाती. And I, within my limited capacity, want to bridge that disparity through the stories that we make, or I act in, or whatever little I can do. All right, okay, and Sanya, हम लोग एक जब भी आपके इंटरव्यूज आपसे होते हैं तो कुछ ना कुछ आप एक नई अनयूजुअल से फिल्म आप कर चुकी होती हैं. फिर हमारे मतलब ये है कि आपके लिए तारीफों के बहुत सारे आई थिंक नए नए रीजंस होते हैं. बाकी ये है कि आपके जो इंस्टाग्राम के वीडियोस हैं, अब तो very आप kind to me, yaar. You are. अच्छा देखिए, am I being kind or am I being honest? You're being honest, है ना? I'm being honest. And तो kind too. भाई अभी समानता जो है आपकी डांस की आपकी तारीफ कर रही है. सो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि बड़े पर्दे पर आप कब डांस करें, उसके साथ में आप आएंगी. तो मेरा सवाल आपसे ये था कि दैट someone who has come right from the bottom and with getting this sort of praise, how do you make sure that you don't let it affect yourself? Because देखिए, आप बहुत ही चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से हैं जिनके लिए फिल्में बनाई जा रही हैं, जिनको लेकर एक कहानी को पूरा बुना जा रहा है, जो कि बहुत ही आई थिंक तभी होता है जब द एक्टर इज डिपेंडेबल बोथ एज एन एक्टर एज वेल एज अ स्टार, एंड दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट. लेकिन वो लेवल हेडेड रखना कितना ज़रूरी है कि उस तारीफ को not getting it affected, or maybe having more hunger to just go all out in your next venture? I think it's something that I do very mindfully in my personal and professional life. वो level headed रखना तभी हो पाता है when you're surrounding yourself with the right kind of people. And I've been, as I said, very lucky. जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ वो भी ऐसे ही हैं, और जो लोग मेरी पर्सनल लाइफ में वो भी ऐसे ही हैं. सो आई थिंक दैट्स द रीज़न मेरी जितनी अचीवमेंट्स हैं, आई कीप पुशिंग माई सेल्फ. वो अचीवमेंट्स तो हैं, आई रियली एक्नॉलेज दैम एंड आई नो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर देम, बट दैट won't stop me to better myself every time I work, or every time I pick up a script or plan to do a character. तो वो रोकना नहीं चाहती हूँ मैं. और मतलब आई थिंक द काइंड ऑफ पीपल दैट आई एम सराउंडेड विद help me a lot to stay level headed. Yeah, मैं ये भी मैं आपको पढ़ रहा था कि आपने किसी इंटरव्यू में आपने बताया है कि 8 बजे के बाद में आप अपने को स्विच ऑफ करना चाहती हैं. जो आपका एक रेगुलर लाइफ है उसको आप उस पर आप फोकस करना चाहती हैं. एंड एक इन योर नेचुरल लाइफ एज वेल, लाइक से ड्यूरिंग इंटरव्यूज एज वेल, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो कि बहुत रिसेंट है आपके साथ में. हाँ, जिसमें पानी गिरा दिया था. पिछला इंटरव्यू जो आपके साथ में किया था. हाँ जी. और मैंने आपसे सवाल पूछा था कि एक स्पेकुलेशन है कि आप शाहरुख खान के साथ में आप फिल्म कर रही हैं. हाँ. एटली की. हाँ. तो इतना वो सोशल मीडिया पे शेयर किया गया, सिर्फ वो वीडियो क्लिप 30 सेकंड का काट के. हाँ. मेरे पास भी बहुत से लोगों ने उसको मतलब ट्विटर में शेयर किया और वैसे भी इंस्टाग्राम पे भी. तो उसमें जो एक जनरल रिस्पॉन्स ये है कि इनके तो एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि ये कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं. जो आपके नेचुरल एक्सप्रेशन, तो आपके जो नेचुरल एक्सप्रेशन है वही बहुत कुछ बयान करते हैं, which is I think great actually in a way. पता नहीं, ये तो मैं कवर अप नहीं कर पा रही, तो मैं एक्टिंग कैसे करती हूँ. हद है, घर जाके देखना पड़ेगा ये इंटरव्यू. ये क्या किया सोना. All right, okay, so लव हॉस्टल का भी हम लोगों ने 20 मिनट का हम लोगों ने करीबन क्लिप देखा है. तो जो जिस तरीके का कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके का सारा एक आई थिंक वो लव हॉस्टल, आई थिंक जो आपके मेट्रन है मेरे ख्याल से जो वहाँ के लव हॉस्टल के, वो बहुत ही दिलचस्प लगे मुझे. तो है ना, ब्रिलियंट एक्टर, आई थिंक बहुत ही भयंकर आर्टिस्ट है वो सर. सो जो कॉन्वर्सेशन उनके साथ में हो रहा था, आई थिंक वो, एंड देन दे क्लोज द क्लिप एंड देन यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू द फिल्म, आई थिंक व्हिच इज एक्साइटिंग. सो आपको लगता है कि ये इस तरीके के सब्जेक्ट जो है वो मे बी OTT के लिए एक टेलर मेड है एक तरीके से, बिकॉज उसमें आपको पता है कि दैट एक सर्टन ऑडियंस आपको मिल रही है which is ready for something maybe not so regular content in a way? Sir, I am also still figuring out as we move along. ये जो एक चेंज आया है, आई थिंक पिछले खास तौर पे तो कोविड के बाद ही हुआ है ये. आई एम ऑल्सो स्टिल लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड अनलर्निंग, सो आई रियली डोंट कंसिडर माई सेल्फ क्वालिफाइड इनफ टू कॉमेंट और जनरलाइज. बट वट एवर आई फील or I sense or gauge right now is that digitization definitely has expanded our own boundaries. For example, आज अगर लव हॉस्टल जैसी फिल्म 190 देशों में देखी जाएगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी को कहीं ना कहीं तो इन्फ्लुएंस करेगी ही करेगी. And that the same thing applies to us also in the last 7-8 years because of
OTT platforms, the kind of international content we as audiences are consuming has entirely changed, and the consumption patterns have changed. Aaj, statistically speaking, nearly 50% of your content is consumed on an 11-inch mobile phone. Maybe more. Say 50%. Matlab, statistics It's be actually more unreliable. than that. Yeah. Maybe I more. think it's definitely much more than that. Could be. Our tastes have drastically changed in the last few years. Today, we are not making community specific content. We are making content which is universal in language. And what better platform, at least I can speak for myself, what in the last 2-3 films that I have done, for example, Haseen Dilruba was the most watched film last year. Yeah. We probably could have not achieved that had we come in theaters. Maybe. You never know. There are always ifs and buts. So, yeah, I think it's probably because of these things that I think OTT is a platform that helps us to reach out on a much larger scale, and it's at your own discretion. As an audience, at the click of a button, you can choose what you want. There is so much of content available, and there are many other facets to it. I think I'm also, as I said, I'm learning quite a lot of things, unlearning a lot of things, exploring as we move forward. So far so good. COVID's been kind. People, at least one good thing is that we are getting to communicate with our audiences, Yeah. irrespective of the medium that we are coming on, and that's something is that I want to continue doing that. Every 3 months, 4 months, even Sanya, for that matter of fact, in the last 1.5 year, we've seen her stupendous performance in Paglet. She was acknowledged for that. Thank you. And what she's done in Meenakshi Sundareshwar, it still continues to trend on Netflix India. So she's been communicating, interacting with the audiences every 4 months, maybe because of OTT platforms. Well, definitely, and आप थोड़ा सा मतलब ह्यूमिलिटी से आप काम ले रहे हैं बिकॉज यू आर वन ऑफ द एक्टर्स जिसने गैर मामूली आई थिंक कामयाबी देखी है OTT पे. मतलब मिर्ज़ापुर के जितने मीम्स बने, आई थिंक मीम जो है वो कामयाबी की निशानी है, That's true. और Yeah, वो आज sir. भी शेयर होते हैं. पर क्रिमिनल उसमें जेन्युइन कितना है, उसमें क्यूरेटेड कितना है, वो मुझे नहीं पता अरे सर. आप अब देखिए, अब ये मीम हो humility है, की आपने ठीक है? ह्यूमिलिटी की छोरा क्या है या कर दिया छोरी? आपने? नहीं पता चल जाता है वो तो. मतलब एंड सेम विद आई थिंक इवन क्रिमिनल जस्टिस सॉर्ट ऑफ रीच दैट हैज हैड, एंड खैर परफॉर्मेंस तो आपका, एक्टर तो आप गैर मामूली हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं. थैंक यू सर. ऑलराइट, सो Sanya, do you in a way like this fascinating कि that एक अच्छे एक्टर की, एक अच्छे किरदार की कदर हो रही है, बनिस्बत दिस इंटायर पर्सोना कि दैट जो एक स्टारडम का एक है जो कि अपने तरीके से अच्छा है, उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है. Do you like that fascinating, like someone like Vikrant Massey is celebrated in the interiors of country. मतलब यूपी में चले जाएं तो मतलब ये वहाँ पर He उठा लिए deserves जाएंगे. it. हाँ. He deserves every single bit of that praise. I So was. do you. Thank you so much. Right. But if I talk about Vikrant, I was quite blown away from day one on set. I think he has really inspired and motivated. कि एक तो अलग competition भी था because he reads script almost every day. तो मैंने कहा जो मेरे से भी ज़्यादा homework करके जा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो that he really pushed me. I think he She's just been deserves too kind. every She's just single. been too kind. Please let me complete it. But he is a fantastic actor, Faridoon. We have seen it last year. चाहे OTT पे इनकी कितनी भी releases हैं, इनके टेलीविजन के शोज़ हैं, जितनी ये मेहनत करते हैं, आई थिंक ही डिजर्व्स एवरी प्रेज एंड द रिकग्निशन दैट ही इज़ गेटिंग फ्रॉम द ऑडियंस. एंड आई थिंक ही शुड गेट मोर बिकॉज ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर दैट वी हैव टुडे. ही इज़ फैंटास्टिक. She is my favorite actor. अरे यार क्या बात है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको? Mutual Admiration Society. या Okay, हमारी so- फिल्म देखना मत भूलिएगा लवर्स. Alright, so अभी जो 20 मिनट का देखने के बाद जो अंदाजा हुआ, मतलब आई फील कि जैसे आपने बताया मीट शॉप आपके फादर चलाते हैं and all that, मुझे लगता है कि थोड़ा सा there is more to the story than what we have seen so far. As an actor, how important is it for you to push the envelope, in terms of to be courageous? Because I think the definition of courage, I think वो भी I think वक्त के साथ में बदलती रहती है. जी. In my case, I think it is very very important to keep pushing the envelope from time to time because I come from television. मैंने 10 साल टीवी किया है और मेरा ये मानना है कि बहुत ही तेज़ी से दुनिया आगे बढ़ रही है और अगर रेलेवेंट रहना चाहते हैं आप तो आपको अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर के साथ साथ अपने आप को भी अपडेट करना ज़रूरी है. तो या द आइडिया इज़
to just, try pushing the envelope. I think pushing the envelope is a byproduct when you try pushing yourself. जब मेरे को कभी कभी ऐसे रियलाइज होता है कि शायद मैं कंप्लेसेंट हो गया हूँ, शायद मैं उतनी मेहनत नहीं कर रहा, तो देन probably, and maybe a lot of it is also because of the incredible team that I have. I have a fantastic team that works for me, round the year, and we probably end up recognizing an opportunity that is going to satisfy both the ends, which is satisfying me as an actor, challenge myself as an actor to sort of, जो रिडंडेंट हो गई ये चीज़ें, जो डोमेंट हो गई, उनको हटा के एक नया बीजा बोना भी ज़रूरी होता है, एंड विच ऑल्सो समवेयर डाउन द लाइन इज कंकॉमिटेंट विद पुशिंग द एनवेलोप, इफ आई एम मेकिंग सेंस. तो ये 2-3 चीज़ें आई थिंक एक ही डिसीजन से इम्पैक्ट होती हैं. आई रियली फील कि it's very important to at least tell stories that are relevant in the times that you're living in. Right. कोशिश यही रहती है सर, और that's about it. So I individually really want to go out there, and I'm a storyteller by nature. I want to go out and tell stories that matter to me individually. If in turn they end up challenging me as an actor, and if I end up pushing the envelope and reaching out to even 2 out of 10 people, I think my job is done. All right. दंगल से हम लोगों ने देखा है कि आपने एक जो ज़ुबान पे, आप डायलेक्ट्स पे जो आप एक पकड़ हासिल करने की कोशिश करती हैं, वो एक आपका आई थिंक ऑनगोइंग प्रोसेस मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि रहा है. यहाँ पर भी हम वो देख रहे हैं, लव हॉस्टल में भी हम देख रहे हैं. वो प्रोसेस कितना आपके लिए ज़रूरी है टू गेट दैट नुएंस राइट इन टर्म्स ऑफ वट एवर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्लेस दैट यू आर part of as an actor? I think crucial now, and it's a fun thing to do as an actor also, to get the dialect right. I really enjoy it. But दंगल में और ज्योति में भी बहुत फ़र्क है, बबीता और ज्योति में, क्योंकि बबीता वहाँ की रही है और ज्योति ने सीए किया है दिल्ली में, और पढ़कर आई है बाहर, दोस्त की फैमिली हरियाणा से है. तो मुझे ये था कि उसको डायलेक्ट दिया जाए या नहीं दिया जाए, तो आई डिसाइडेड नॉट टू, बिकॉज उसका वो रीच है, मतलब वो पढ़कर आई है दिल्ली से, तो उसका बोलने का तरीका अलग होगा. एंड आई रियली लाइक द जक्सपोज बिटवीन आशु एंड ज्योति, बिकॉज आशु का है वो डायलेक्ट जिसमें वो बात कर रहा है, तो इट शोज दैट देयर 2 वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, बट येट वन. सो दैट आई रियली लाइक्ड. तो एक ऑप्शन था टू गिव हर अ डायलेक्ट, बट आई एम ग्लैड दैट वी डिडंट. तो हल्का सा है जो भी है, but as an actor I really enjoy to learn a new language or a dialect whenever I'm like performing a character like her. मेरे को बड़ा मज़ा आता है.